Okay, so hello students. So in today's class, we will start with the reaction part of carbon and its compounds. So the first reaction will be combustion. After that, we'll go to the oxidation reaction, then addition reaction, and after that, we'll move on to substitution reaction. Okay, so let's start with the first type of reaction, that is combustion reaction. Clear? Perfect. So the first point is carbon in all its allotropic forms. In all its allotropic forms, burns in oxygen you mean to say oxygen gas, to form CO2, comma, heat and light energy. Clear? Carbon in all its allotropic forms. Now, what do you mean by allotropic forms? Allotropic form means the different allotropes of carbon. Allotrop का मतलब क्या होता है? कार्बन के जो भी different forms environment में present है, we call it as allotropes. Okay? तो कार्बन अपने जिस भी allotropic form में रहेगा, अगर वो ऑक्सीजन के साथ react करेगा, then what will be formed? Carbon dioxide, heat energy and light energy. Okay? This first point is clear. Second point, hydrocarbons burns in oxygen, means reacts with oxygen to form CO2, comma, water, comma, heat and light energy. Okay, it means if you are having a hydrocarbon and if that hydrocarbon is reacting with oxygen, then it will produce carbon dioxide, comma, water and heat and light energy. We'll take an example, or we can say we'll take the reactions part. Okay, so basically combustion में आपके NCERT में total 3 reactions given. We'll just see only that part. Okay, we'll stick to the reaction that is given in NCERT. Okay, so the first reaction is carbon plus oxygen gas or oxygen forms what? Carbon dioxide plus heat and light energy. The second point, hydrocarbon. We will take an example of methane. Methane is hydrocarbon. So CH4 plus O2, that is methane, will react with oxygen gas to form carbon dioxide plus water plus heat and light energy. Okay. Now one more reaction is given regarding ethanol. Now ethanol भी एक fuel होता है. Okay. So basically ethanol, again, if it will react with oxygen gas, then the products will be carbon dioxide, comma, water and heat and light. So ethanol is CH3, CH2, OH plus oxygen. The products formed will be CO2 plus water plus heat and light. Okay, that's all. Now we'll continue the next reaction, that is oxidation reaction. Clear? Okay. The first point, oxidation. क्या पता चल रहा? Addition of oxygen. Please इस point को आप याद रखेंगे. Clear है? So the first point, alcohol gets converted to carboxylic acid. Please remember these points. Okay. In an oxidation reaction, alcohol gets converted to carboxylic acid. Okay. In the presence of oxidizing agent. Okay. किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ड्यू टू विच अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? नाउ बेसिकली इस रिएक्शन में थोड़ा हीट का भी रिक्वायरमेंट होता है, प्लस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट इज alkaline KMnO4. Now what is KMnO4? Potassium permanganate. Okay, potassium permanganate. Or one more oxidizing agent is given in your NCERT book, that is acidified
Cr2O7. K2Cr2O7 is what? Potassium dichromate. Okay. Either of the names you can write. Either you can write alkaline KMnO4, that is potassium permanganate, or you can write acidified K2Cr2O7. What is K2Cr2O7? Potassium dichromate. Clear? So, example ले लेते हैं reaction. So the reaction that is given in NCERT is about ethanol. CH3, CH2OH. Okay. Ethanol. Obviously, it will react in the presence of oxidizing agent. Clear? Either of the oxidizing agents you can write. Alkaline KMnO4. Now, on the left hand side, you can see we have written ethanol. Okay. And it is having how many carbon atom? 2 carbon atom. So basically जो product इसका form होगा उसमें carboxylic acid वाला functional group तो present होगा, but the carbon atoms will remain same. As on the left hand side, if only 2 carbon atoms are there, it means ethanol is having 2 carbon atoms. So it means जो हमारा carboxylic acid form होगा उसमें भी 2 ही carbon atoms present होंगे. So if we write about ethanoic acid, CH3COOH. You can also represent in the manner CH3 second carbon. Now ये second carbon इसके दो ऑक्सीजन connected हैं. Clear? तो इन दो ऑक्सीजन को आप कनेक्ट कैसे करोगे? One oxygen will make a double bond with carbon. The other oxygen will make a single bond with carbon and OH in this manner. Clear? So on the left hand side we are having ethanol, and on the right hand side we are having ethanoic acid. Clear? Understood? Now one more reaction will take. This is not given in NCERT, but it is given in your exemplar book. Clear? Only we are just changing the number of carbon atoms, nothing more than that. Clear? चलिए देखते हैं. CH3, CH2, CH2OH. This is propanol. Okay. Again, it will also react in the presence of oxidizing agent. Heat करना है, and either of the names you can write. Acidified K2Cr2O7. So again, right side will contain how many carbon atoms? 3 carbon atoms. CH3, CH2, COOH, or you can write CH3, CH2. Okay. Okay. This carbon is having 2 oxygen connected to it. So one oxygen will make a double bond. The second oxygen will make a single bond. Propanoic acid. I hope it is clear. Now please write that theory wala point also, like alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4 is acting as a oxidizing agent. Okay, alkaline KMnO4 is acting as an oxidizing agent because it oxidizes alcohol to carboxylic acid. Okay, because questions में बहुत बारी topics पूछे गए हैं, like what is the role of alkaline KMnO4. So you just have to mention alkaline KMnO4 is acting as an oxidizing agent because it oxidizes alcohol to carboxylic acid. Okay, I hope this point is clear. चलिए move करते हैं next reaction की तरफ, that is addition reaction. Addition reaction. First point. Again, addition reaction may be unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon gets converted to a saturated hydrocarbon. किसके प्रेजेंस में? सबसे पहली बात, unsaturated hydrocarbon, it will react with
hydrogen gas in the presence of a metal catalyst, that is nickel. Okay, it is a metal, and what is the name of this metal? It is nickel. Clear? Now nickel is what? Nickel is a catalyst. Now catalyst का role क्या होता है वो discuss करते हैं. Okay, so the first point in addition reaction is what? An unsaturated hydrocarbon reacts with hydrogen gas in the presence of nickel as a catalyst to form a saturated hydrocarbon. Clear? Okay. So what's the role of the catalyst? Basically catalyst होता क्या है? ये point भी आपसे पूछा जा सकता है. Okay, as it is mentioned in your NCERT book. Okay, लिखिए. Catalysts are the substances. Catalysts are the substances that changes the rate of the reaction, that changes the rate of the reaction without the reaction being affected. Clear है? Catalysts are the substances that changes the sorry that changes the rate of the reaction without the reaction being affected. इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है ना. रेट को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? चेंज करता है. जनरली वी कैन बढ़ाते जनरली है, बट जनरल टर्म हम चेंज लिखते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं. वी आर राइटिंग ओनली अ जनरल टर्म कि चेंज कर देता है वो रेट को. ठीक है ना. इसका मतलब ये हुआ, सपोज product formation was taking place after 5 minutes. Okay, product formation was taking place after how many minutes? 5 minutes. So catalyst को अगर हमने ऐड कर दिया तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो सपोज 2 मिनट में हो गया या 1 मिनट में हो गया. तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बट पहले जो प्रोडक्ट 5 मिनट में फॉर्म हो रहा था ना, वही प्रोडक्ट अब सपोज 1 मिनट में फॉर्म हो जाएगा या 2 मिनट में फॉर्म हो जाएगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है. सो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट द रिएक्शन बीइंग अफेक्टेड. क्लियर. चलिए रिएक्शन देख लेते हैं. तो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी कैन टेक? बिकॉज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी आ सकता है या कार्बन एंड कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है. सो विल टेक बोथ द एग्जांपल्स. ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर हैविंग 3 कार्बन एटम्स इन विच वन बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. क्लियर है? तो CH3, ये CH और ये CH2. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन? इट इज propene. Prop is the root word, en is the suffix. It will react with hydrogen gas in the presence of nickel as a catalyst. Now, what you have to do in this reaction? So basically, अगर आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है या प्रोडक्ट जो भी फॉर्म करवाना है, क्लियर, तो बेसिकली द प्रोडक्ट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो बेसिकली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें आपको इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है. ओके, नाउ अगर ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, देन ड्यू टू विच राइट वाला कार्बन एंड लेफ्ट वाला कार्बन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड वन वन हाइड्रोजन टू ईच कार्बन. दैट्स इट. इतना ही आपको इसमें याद रखना है. डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है एंड दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को ऐड करना है. दैट्स इट. तो सिंपल सा लॉजिक है. अगर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये क्या दिखेगा? CH2. एंड दिस कार्बन वाज हैविंग 2 हाइड्रोजन, तो अगर उसमें एक हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो ये क्या दिखेगा? CH3. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. परफेक्ट. तो CH3, CH2 एंड CH3. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया बिकॉज जो डबल बॉन्ड था उसे हमने ब्रेक कर दिया. क्लियर है? सो नाउ दिस हाइड्रोकार्बन इज व्हाट? प्रोपेन. ओके, इट इज प्रोपेन. नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल. कार्बन, कार्बन, triple bond. Clear? CH3. Now, it will also react with hydrogen gas in the presence of nickel, but we will write 2H2 over here. Now, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? Because on the left hand side you can see total 3 bonds are there. So अगर इसे हमें saturated hydrocarbon में convert करना है, so what we need to do, we need to break 2 bonds. हमें 2 bonds को break करना होगा. And if we will break 2 bonds, then we have to add a total of 4 hydrogen atoms. Because जब एक बॉन्ड हमने ब्रेक किया था तो दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन को हमने अटैच किया, बट यहाँ पे हम 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो दोनों कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे. दैट्स इट. क्लियर?
So after breaking the other two bonds, the product will be CH3, CH2 and CH3. Okay. So this reactant is what? It is propyne and this is propane. Okay. Perfect. I hope this point is clear. Now one more thing, like addition reaction is also known as hydrogenation because यहाँ पे hydrogen का addition हो रहा है, that is why. Okay, please mention this point. Okay, like ये point again exam में frame हो चुका है इस question के ऊपर. Okay, like addition reaction also called as hydrogenation because hydrogen यहाँ पे add हो रहा है, that is why. Clear? Okay, the last reaction of today's class is substitution reaction. Okay. Now as the name suggests, substitution मतलब substitute करना है. Okay, so similarly basically NCERT में आपका एक ही reaction mentioned है regarding the substitution reaction. So what is mentioned over there, that saturated hydrocarbon मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होने वाला है. ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन reacts with chlorine gas in the presence of sunlight, in which each hydrogen atom of the hydrocarbon in which each hydrogen atom of the hydrocarbon gets substituted by chlorine atom 1 by 1. ओके, सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे हम एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे ना, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन. ओके, सो मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेसिकली कार्बन इज हैविंग, मीथेन है, मीथेन के पास टोटल चार हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो दैट कार्बन इज हैविंग 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड टू इट. सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, क्लोरीन के यहाँ पे दो एटम्स हैं, Cl2 क्लोरीन गैस, दो एटम्स उसमें प्रेजेंट है, तो बेसिकली वन क्लोरीन एटम will substitute one hydrogen atom 1 by 1. Okay, and as a result we will write a number of reactions over here, but आपकी NCERT में सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन गिवन है जिसमें फर्स्ट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है क्लोरीन से. यू जस्ट हैव टू राइट दैट पार्ट. क्लियर? सो बेसिकली कार्बन के पास टोटल 4 हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है किससे, क्लोरीन से. So after substituting hydrogen with chlorine, the compound will look like CH3Cl plus. Okay, now क्योंकि क्लोरीन गैस के पास दो एटम्स हैं तो एक क्लोरीन एटम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया. What about the second chlorine atom? The second chlorine atom will combine with the hydrogen because टोटल 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूट हो गया. So one hydrogen from here and one chlorine from here, it will combine to form HCl. Okay, this much only you have to remember. Substitution reaction में reactant में क्या है, saturated hydrocarbon, it is reacting with chlorine gas in the presence of sunlight to form a product in which chlorine gets substituted by, or you can say chlorine takes the place of hydrogen 1 by 1. I hope this point is clear. Okay students, so that's all for today's class. So in the next video we will be taking some more reactions. Thank you very much.